like a Hellcat. हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो आज है अगस्त 11 2020। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स का ये वीडियो। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं आंसर्स ऑफ सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन, जो कि आपको पिछले वीडियो में लास्ट में मिला था। और ये क्वेश्चंस और आंसर्स हैं। नारायणपुर डैम विच इज़ इन न्यूज़ रिसेंटली इज़ बिल्ट ओवर विच रिवर? तो आंसर है कृष्णा रिवर। देन हु इज़ द प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया? जवाब है संदीप प्रधान। नेक्स्ट इज वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ LIC इज़ लोकेटेड एट? तो वो है जवाब मुंबई। देन व्हाट इज़ द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ मोजाम्बिक? तो जवाब इसका मैपुटो एंड मैटिकल। एंड लास्ट वन इज़ कि विच इज़ फर्स्ट कंट्री इन इंडिया in the Indian Ocean region to achieve this status of tsunami ready from the Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO? तो जवाब है इंडिया। और अफसोस की बात है कि किसी का भी जवाब परफेक्टली सही नहीं हो पाया है। नाउ लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्रिकेट वर्ल्ड से। विच कंट्री इज गोइंग टू होस्ट द ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2021? और साथ ही साथ एक और खास बात तो लिखी हुई है, T20 वर्ल्ड कप 2022 विल बी होस्टेड बाय ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये भी जानकारी के लिए रखेंगे आप सभी। एंड ऑप्शंस आर बांग्लादेश, श्रीलंका, न्यूजीलैंड, इंडिया और UAE। So the correct answer of this question is India, option number 4. Now let's have the explanation part. International Cricket Council confirmed that India will host the men's T20 Cricket World Cup 2021, that is 7th edition, between October to November 2021. As the Board of Control for Cricket in India, that is BCCI, retained the hosting rights. Originally, the tournament was to be held in Australia from 18th October to 15th November 2020. तो जैसा आप सभी को पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया के पास ये राइट्स थे फॉर होस्टिंग द क्रिकेट वर्ल्ड कप, जो कि 18 अक्टूबर से 15 नवंबर 2020 में होना था। लेकिन आप सभी जानते हैं कोविड-19 की वजह से ये कैंसिल हो गया। तो अब आने वाला वर्ल्ड कप 2021 में होगा, जो कि इंडिया होस्ट करने वाली है। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, द ड्रैगन एंडेवर is the spacecraft of which space company? And options are Air Launch, then next is SpaceX, then KinetX, then Blue Origin, and last Astra. And ये है वो spacecraft जिसकी बात हो रही है, और इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, दैट इज SpaceX। ठीक है, now let's have the explanation. NASA astronauts Robert Behnken and Douglas Hurley are aboard the SpaceX Crew Dragon Endeavour spacecraft as it is lifted onto the SpaceX Go Navigator recovery ship shortly after landing in the Gulf of Mexico off the coast Pensacola, Florida, Sunday, August 2, 2020. The Demo 2 test flight for NASA's commercial crew program was the first to deliver astronauts to the International Space Station and return them safely to Earth on board a commercially built and operated spacecraft. Behnken and Hurley returned after spending 64 days in space. Now let's have the next question. Name the company which has partnered with Gavi and the Bill Melinda Gates Foundation to speed up the manufacture and delivery of COVID-19 vaccines for India. And options are Indian Immunologicals Limited, then Serum Institute of India, then Bharat Serums and Vaccines Limited, then GlaxoSmithKline Pharmaceutical Limited, and last one is Panacea Biotech Limited. और ये है वो वैक्सीन जिसकी हम बात कर रहे हैं। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, दैट इज सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। एंड नाउ लेट्स हैव द एक्सप्लेनेशन। Serum Institute of India Private Limited has entered into a new partnership with Gavi, the International Vaccine Alliance, and the Bill and Melinda Gates Foundation to accelerate the process of manufacture and delivery of up to 100 million doses for COVID-19 vaccines for India and other low and middle income countries by 2021. As part of Gavi COVAX Advanced Market Commitment, a mechanism within the COVAX facility, the vaccine will be made available to 92 countries, including in Gavi's COVAX AMC.
Then Serum Institute of India has set a ceiling price of $3 per dose. तो ये उसका रेट है और आप सभी को ये रेट याद रखना चाहिए और साथ साथ ये है नंबर ऑफ डोजेस जिसके लिए बात हो रही है. Now let's have next question, fourth. Find the IIT which in collaboration with Imperial College London develops nanoparticle metagrid. And options are IIT Ropar, then IIT Jodhpur, then IIT Guwahati, IIT Bombay, IIT Kanpur. And the correct answer is option number 3, that is IIT Guwahati. Now let's have the explanation. The Indian Institute of Technology, that is IIT Guwahati, India, and Imperial College London, United Kingdom, have developed nanoparticles called the metagrid or metamaterial grid that makes the light emitting diodes, that is LED, brighter, energy efficient and durable. It was jointly developed by Dr. Devabrat Sikdar, Assistant Professor at IIT Guwahati, along with Professor Sir John B. Pendry and Professor Alexei from Imperial College London. The findings have been recently published in Light, Science and Application Journal of the Nature Publishing Group. Next question is, Union Minister of Education Ramesh Pokhriyal Nishank has inaugurated global conference on reimagining and transforming the university, hosted by which university? And options are Amity University, Birla Institute of Technology and Science, then Lovely Professional University, then OP Jindal Global University, and last one is SRM Institute of Science and Technology. And the correct answer is option number 4, that is OP Jindal Global University. Now let's have the explanation. Ramesh Pokhriyal Nishank, Union Minister of Education, inaugurated the global conference on reimagining and transforming the university. Confluence of of ideas during the beyond the COVID-19 disruptions, hosted by OP Jindal Global University and International Institute of Higher Education Research and Capacity Building on 6th and 7th of August 2020. Now let's have the next question, question number 6. The researchers from which IIT has won Gandhian Young Technological Innovation Award 2020 for generating electricity from wet clothes? तो गीले कपड़ों से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की बात हो रही है और ये किस IIT ने डेवलप किया? IIT Madras, IIT Delhi, IIT Calcutta, IIT Kanpur और IIT Kharagpur. The correct answer is IIT Kharagpur, that is option number 5. Now let's have the explanation. Gandhian Young Technological Innovation Awards 2020 is bestowed to a group of researchers from Indian Institute of Technology, Kharagpur, for developing a mechanism for generating electricity from wet cloths left under sunlight to dry. The work has been published in Nano Letters, a high-impact journal in the field, and the innovation has been patented by them. Next question is, Flipkart signed MOU with which state government's One District, One Product scheme recently? Options: Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Gujarat, Maharashtra और none of the above. ये है वो MOU, ठीक है, और आपको जवाब भी इससे मिल ही गया होगा क्योंकि उसमें सीएम का फेस लगा हुआ है. एंड सो दैट द आंसर इज उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर 2. नाउ लेट्स हैव द एक्सप्लेनेशन. E-commerce platform Flipkart signed a MOU with Uttar Pradesh government's One District, One Product scheme. As part of MOU, artisans, weavers, and craftsmen under the One District, One Product scheme will be brought into the Flipkart Samarth initiative. The partnership will enable the underserved communities to showcase their specialized products and crafts in the e-commerce platform. Now the next question is from SEBI. As the amendment made by SEBI, that is Securities and Exchange Board of India, in SEBI IFSC guideline 2015, the shareholdings limit should be at least what percentage of the clearing corporations? And options are 47%, 49%, 51%, 53%, and none of the above. The correct answer is option number 3, that is 51%. Now let's have the explanation. Securities and Exchange Board of India, that is SEBI, amended the clause 4, section under 2 of SEBI International Financial Service Center, that is IFSC guidelines 2015,
pertaining to eligibility criteria and shareholding limits for clearing corporations that wish to operate in such center under the norms. Any Indian recognized stock exchange or clearing corporations or any recognized stock exchange or clearing corporation of foreign jurisdiction will form a subsidiary to provide the services of a clearing corporation in IFSC, wherein at least 51% stake is held by such exchange और क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस। तो काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन था इसके बारे में। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अभी रिसेंटली आप सभी ने इस इमेज को देखा होगा, काफ़ी वायरल हुआ था और जानते हैं आप सभी क्या है, अयोध्या मंदिर को लेकर के है। तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन, द राम टेम्पल इन अयोध्या विल बी कंस्ट्रक्टेड इन विच आर्किटेक्चर स्टाइल? तो ऑप्शंस हैं द्रविडियन स्टाइल, देन मुगल स्टाइल, Nagara style, then Visara style or Kalinga style. The correct answer is Nagara style, option number 3. Now let's have the explanation. PM Modi symbolically laid a 40 kilogram, that is 88 pound silver brick foundation stone to formally start the construction of a temple dedicated to Hindu deity Ram in the city of Ayodhya in the northern Indian state of Uttar Pradesh. Modi also released a postage stamp on the Ram Janmabhoomi temple. The temple will be constructed in Nagara styles of architecture and will have 5 domes instead of 2. तो देखिए काफ़ी कुछ आर्किटेक्चर के बारे में जानकारी है। पहली तो चीज़ ये कि फाउंडेशन लेट करने के लिए 40 किलोग्राम का सिल्वर ब्रिक लगाया गया था, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि उस टेम्पल पर बेस्ड पोस्टर स्टैम्प्स भी रिलीज़ किया गया है और साथ ही साथ नगारा स्टाइल में आर्किटेक्चर काम करेगा और 5 डोम्स की जगह सिर्फ 2 ही, इंस्टेड ऑफ 2 5 डोम्स होंगे, ठीक है। नाउ लेट्स हैव द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, which is first state in India to delink incentives from state goods and services tax? Options are Gujarat, Karnataka, Tamil Nadu, Kerala or Maharashtra. And the correct answer is Gujarat, that is option number 1. Now let's have the explanation. Gujarat government announced the new industrial policy 2020 for the state with an expected average annual outlay of up to rupees 8,000 crore, which is meant to provide incentives to the industries. It aims to provide an estimated amount of rupees 40,000 crore as subsidies to industries in next 5 years. Under the new policy, Gujarat will become the first state to de-link incentives from state goods and service tax, that is SGST, where large industries will be provided up to 12% of fixed capital investment to set up manufacturing operations in the state in form of capital subsidy. So अब आते हैं अपने आज के वीडियो के सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस की तरफ। सो पहला है, द अरविकुलम नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? नेक्स्ट इज नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क, which is in news recently, is located in which state? Then Visakhapatnam Port Trust is located in which state? Then where is the headquarters of Serum Institute of India located at? And the last is, where does the Pilibhit Tiger Reserve located at? तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स और सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन एंड होप सो कि आप सभी को अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।